A warm welcome to the class of GK. Here we will discuss some general knowledge about the national parks of India, that is chapter number 5. Let us start it. What is national park? It is a area, or you can say park, used for the conservation purpose. The main idea behind all national park is conservation of wildlife for protecting the environment. A national park is a relatively large land area or occasionally sea or fresh water protected by the state of government or state of nation for the preservation of wildlife. National parks are officially recognized by a nation's government, and these boundaries are well marked and circumscribed. National parks are built to protect animals that live inside them or the land itself. Hence, these parks protects animals living in their natural habitat. In short, these national parks are for the protection of wildlife. But what is wildlife? So let us start it. Wildlife, these are the organisms that grow or live wild in an area without any introduced by human or human interference. Introduced matlab without any human activities or without any human disturbances. This wildlife we will found in all the ecosystem like deserts, forest, rainforest, plain and grassland. But what is ecosystem? So it is a system in which organisms interact with their physical environment like soil, air, etc. But why should we preserve wildlife? So here are the importance of wildlife. It balances the ecosystem. Means by balancing food chain and food web, you might have learnt in your lower grades. Then it provides stability to the different natural processes of nature like rainfall. For example, transpiration is done from the plant. Then changing of at temperature, that is heat evolution by animals. Then fertility of soil means making of manure by the earthworm, etc. For all these activities, these wildlife are important. Now let us understand how wildlife conservation is done. So first of all, let us see the define of it. It is a practice of protecting wildlife species and their habitats in order to prevent species from going extinct. Extinct का मतलब होना लुप्त हो जाना, खत्म हो जाना. तो अभी ये कंजर्वेशन है, ठीक है, वो किसकी वजह से है? तो ड्यू टू दी थ्रेट्स टू दी वाइल्ड लाइफ. तो व्हाट आर दी थ्रेट्स? तो फर्स्ट इज दैट इज हैबिटेट डिस्ट्रक्शन. We all know that we are cutting down trees and meanwhile the forest got disappeared, and that is the main habitat for this wildlife. So number of places where this wildlife can live got decrease in number, and that is why they got extinct. Then second is over exploitation, harvesting of animals and plants beyond their capacity. मतलब जितनी कैपेसिटी उससे भी हम उसका ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो फिर बाद में क्या होगा? they may get die or they may get extinct. Next is poaching, that means illegal wildlife trading. इकोनॉमी के लिए हम वाइल्ड लाइफ को मार डालते हैं और उनका बिजनेस करते हैं. दैट इज व्हाट द पोचिंग मीन्स कैप्चरिंग ऑफ वाइल्ड एनिमल्स. देन they are sold. Then culling, it means selective killing of wildlife by government for various purpose. एक ही मेन पर्पज होता है, दैट इज फॉर द इकोनॉमी. देन नेक्स्ट इज pollution, means negative impact on wildlife health due to the pollution of gases. They might have breathing problem or many other problems are there that happens due to the pollution. So due to that they may get die and becomes extinct. इन सब
की वजह से आज वाइल्ड लाइफ में बहुत सारी स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो गई है जो अभी हमें देखने को नहीं मिलेगी, और बहुत सारी स्पीसीज ऐसी है जो एंडेंजर्ड हो चुकी है, मतलब थोड़ी सी ही बची है, और अगर हमने उसको कंजर्व या प्रिजर्व नहीं किया तो वो भी मर जाएगी। सो फॉर द प्रिजर्वेशन पर्पज नाउअडेज गवर्नमेंट हैज़ मेड प्रोटेक्टेड एरियाज। व्हाट आर द प्रोटेक्टेड एरियाज? तो दीज आर नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, बायोस्फीयर रिजर्व्स, बॉटनिकल गार्डन, जू एक्सेट्रा। दीज आर दी प्रोटेक्टेड एरियाज। उसमें से हम ये यहाँ पे नेशनल पार्क के बारे में बात करेंगे। अगर ऑल ओवर इंडिया में देखा जाए तो अराउंड 104 नेशनल पार्क्स आर देयर एंड इन गुजरात 4 नेशनल पार्क्स आर देयर। ठीक है, यू कैन ऑल्सो फाइंड आउट विच नेशनल पार्क इज देयर स्पेसिफिकली इन गुजरात। सो वी विल सी नाउ नेशनल पार्क्स इन इंडिया। तो फर्स्ट नेशनल पार्क इज दैट इज Dachigam National Park, that is found in Jammu and Kashmir, and the main species or this national park is best known for the hangul. Hangul is what? You can see it is like a deer. This is known for protection of this type of deer. It is also known as Kashmir stage. तो यहाँ फर्स्ट में जो ब्लैंक दी गई है वहाँ पे पेंसिल से आपको जम्मू एंड कश्मीर लिखना है। Now the second national park is that is Kaziranga National Park, that is there in Assam. Here you will find mainly the species of one-horned rhinoceros. They are protected here. So here for second answer is Assam, that is option number F. यहाँ पे आपको नेशनल पार्क के नाम दिए हैं, बट वो नेशनल पार्क कौन सी जगह पे है वो आपको लिखना है। Then third national park is that is Jim Corbett National Park, that is there in Uttarakhand, that is option number A, and this is well known for the conservation of Royal Bengal tiger. After that the next national park is गिर नेशनल पार्क, दैट इज़ फाउंड इन गुजरात। गुजरात की शान है ये, और यहाँ पे कौन सा एनिमल मिलेगा? द किंग ऑफ ऑल एनिमल्स, दैट इज एशियाटिक लायन। दे आर प्रिजर्व्ड इन द गिर नेशनल पार्क, दैट इज फाउंड इन गुजरात। Then the next is Bandhavgarh National Park, that is found in Madhya Pradesh. In this Bandhavgarh National Park you will find the population of white tiger. That is all over the India. If you will see, then most of the population, maximum population you will find here in the Bandhavgarh National Park. Then next is Periyar National Park, that is there in Kerala. Kerala, that is option number B. Here you will find the species of Asian elephant in more, but along with that you will also find species of tigers also. Then after that the next national park is Bandipur National Park, that is there in Karnataka. Here you will find the wild species of Indian bison. These are very rare species which is to be conserved in this national park. अंडरस्टूड? ये तो सारे आपकी टेक्स्ट बुक के थे, ठीक है, जिसमें आपको वो पर्टिकुलर स्टेट के नाम लिखने हैं कि वह कहाँ पे ये पर्टिकुलर नेशनल पार्क लोकेटेड है। इधर मैंने हेल्प बॉक्स भी रखा है, यू कैन ऑल्सो रिफर इट इफ़ यू हैव एनी डाउट। Now we will discuss some more national parks. In that one, the first is that is Kanha National Park, that is found in Madhya Pradesh. Here in Kanha National Park, you will find the species of Indian tiger and swamp deer. Swamp deer is also known as hard ground Barasinghas. This swamp deer is said to be the pride of this place and called the jewel of Kanha because it's the only species which is found here in the India. Then we will see next is Dudhwa National Park, that is found in Uttar Pradesh. This is what well known for the tiger reserves, that is the main attraction of this park. Then next national park is Great Himalayan National Park, which is situated at the Kullu in the region of Himachal Pradesh. This national park is added to the UNESCO list of World Heritage Site on 23rd June 2014. Its main attraction is Western Tragopards.
दैट इज द एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ फीजेंट। आप देख सकते हो यहाँ पे फीजेंट मैंने पीछे रखा है, यू कैन रिफर दैट। देन द नेक्स्ट इज इंद्रावती नेशनल पार्क। दिस इंद्रावती नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन छत्तीसगढ़ एंड दिस गॉट इट्स नेम by the river Indravati which is flowing nearby to that area. And here the conservation of rare species of wild buffaloes are there. Here you can see this one is the tragopan, that is one of the bird. ठीक है, समझ में आ रहा है? After that the next national park is Kebul Lemjao National Park that is found in Manipur. This is the only floating park in the world. Here you will find floating foliage that is known as फुमड़ी in traditional language. Foliage का मतलब होता है plant leaves. तो फुमड़ी का मतलब क्या हुआ? Decomposed plant material that is leaves. Here you will find the species that is bro-antlered deer or you can say Shanghai. अगर आपने देखी हो फिल्म, इसके ऊपर एक फिल्म डॉक्यूमेंट्री मूवी भी है, दैट इज द रिटर्न ऑफ सांघाई। उसमें पूरे ये नेशनल पार्क के बारे में दिखाया गया है। और ये फुमड़ी जिसके ऊपर जहाँ पे फ्लोट करती है वो तालाब का नाम है लोकताक लेक। यू कैन सी दिस वन इज द लोकताक लेक एंड दिस राउंड शेप दैट इज फुमड़ी। जनरली इसलिए उसको स्मॉल आइलैंड भी बोला जाता है। अंडरस्टूड? Now next is Valmiki National Park. This Valmiki National Park is located at Indo-Nepal border in the West Champarana district of Bihar, India, and it is well known for the Bengal tiger. ठीक है, यहाँ पे ख़त्म नहीं होता है। इंडिया में अगर आप देखो तो all over 104 that is 104 national parks are there, but we have discussed few amongst them. Okay. Now we will solve quiz on the basis of this information because it's the quiz time. The first question is, here you have to do tick mark in front of the correct answer. The first question is, which of the following animals is called the jewel of Kanha, that is of Kanha National Park. तो हमने क्या डिस्कस किया था, याद करो, that is option number C, swamp deer. Then second, which of the following national park is located on the Indo-Nepal border. अभी यहाँ पे देखो जो भी चार ऑप्शन दिए हैं चारों में से एक भी उसका करेक्ट आंसर नहीं है, बट उसका करेक्ट आंसर है वाल्मीकि नेशनल पार्क। तो जैसे मैंने लिखा है वैसे ही आप बाजू में पेंसिल से लिख देना वाल्मीकि नेशनल पार्क। Then third is, which national park was declared a UNESCO World Heritage Site on 23rd June 2014. तो उसमें आएगा, कौन सा आएगा? That is option number B, Great Himalayan National Park. Then fourth is, where is Indravati National Park located? कहाँ पे located है? That is in छत्तीसगढ़, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो पेंसिल से अच्छे से टिक मार्क करना और सेकंड में याद रखना पीछे गलत आंसर दिया है तो आप लिखोगे वाल्मीकि नेशनल पार्क। ठीक है, विथ दिस लेसन गेट्स ओवर, सो कीप लर्निंग एंड स्टे हेल्दी, बट रिमेंबर दूसरे नेशनल पार्क के बारे में अगर टाइम मिले तो ढूंढना ज़रूर। थैंक यू।